अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे अपनी एक बहुत फेवरेट किताब शेयर करूँगी। किताब का नाम है ग्रोइंग अप एज द स्केपगोट टू नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स। किताब लिखी है जे रीड ने, जो कि मेरे बहुत फेवरेट राइटर हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी पर, ख़ास तौर पर नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ पर बात करते हैं और स्केपगोट चाइल्ड को एडवोकेट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इनकी किताब में से कुछ पैराग्राफ मैं आपसे शेयर करूंगी और पूरी की पूरी किताब एक मास्टरपीस है, क्योंकि बहुत आसान अल्फाज में इन्होंने बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है, जो कि पढ़ने वाले को बात समझ आ जाती है। ठीक है, और आप लोग ये किताब ज़रूर ख़रीदिए और पढ़िएगा। ठीक है, और फिलहाल मैं कुछ आपसे पैराग्राफ्स शेयर करूँगी। Happiness in healthy relationships. As I'm writing this, I see a toddler across the room in the cafe where I am sitting. The boy is wholly occupied with some sort of toy, and his mother watches him with a deep fondness. She glides her fingers over his hair, careful not to disturb his focus. I think it is safe to say that she is happy because her son is happy. This is a beautiful display of non possessive love by a mother towards her child. The boy evokes this expression of love from her by doing what makes him happy. Extrapolating from this episode, we might assume that when this boy considers how his mother thinks of him, he might feel warm, special, and worthy of her care. In short, it leaves him feeling loved. Of course, toddlers do not think in the same way adults do, but they have ways of knowing how others think of them. This boy is lucky in that his template for how others see him is accurate and positive. The narcissist's drive to destroy your happiness. The notion of non-possessive love does not compute for a narcissist. They insist that everyone else's happiness must go through them. Why? This is where the motivational system of normal people and narcissists differ. Most of us seek mutual connection with the people in our lives. A narcissist's fundamental motivation is to feel superior to, more important than, and in charge of those closest to them. A narcissist wants these people to care more about what the narcissist thinks about them than what they think about themselves. Why narcissists are so domineering? In order to understand why narcissists operate so poisonously in relationships, it is important to understand a little more about how good enough reciprocal relationships works. We need others' recognition to become ourselves. Remember the riddle? If a tree falls in a forest and nobody is there to hear it, does it make a sound? Jessica Benjamin explains why the answer would be resounding no. When it comes to human development, without the other's recognition of who we are and what we are doing, thinking, and becoming, we do not feel confirmed in any of those ways of being. For example, if we clap and nobody else hears it, we will not feel like we make a sound. Benjamin puts it best. A person comes to feel that I am the doer who does. I am the author of my acts by being with another person who recognizes her act, her feelings, her intentions, her existence, her independence. The subject declares, I am, I do, and waits for the response, you are, you have done. Importantly, the other has to act and be independent from us. We do not feel truly recognized if we are controlling the other.
influencing them to provide us with recognition. Recognition must be given, it can never be taken. The toddler in the cafe received his mother's recognition as he played with his toy. She gave it to him because she wanted to. Her respect for his focus on the toy showed that she recognized and respected his independence too. If the other has what we need and we have no absolute control over whether it is given, then our independence rests in our dependence on the other. There is a boldness and a vulnerability in being who we are. Bold because we must act in accord with what we truly feel. Vulnerable because we need the other to be willing to recognize those acts. And we cannot control the other's willingness. We also need the recognition to be able to acknowledge our own independence. A narcissist rejects this vulnerability. At the deepest of levels, a narcissist has traded recognition from an independent other for dominance over a submissive other. In this kind of arrangement, there is nobody left to truly recognize the narcissist. Although the narcissist forgoes the kind of recognition that would let them feel their real existence, they do get a feeling of power and they do get a feeling of power and superiority in exchange. So the narcissist is making do with dominance instead of recognition. The lack of true recognition is like a chronic wound that requires constant bandaging. Scarily, the narcissist bandages their own despair and terror of going unrecognized by further exerting dominance over the other person. They require a constant supply of feeling dominant, or they will psychologically implode. The narcissist then is dependent on the other. They need the other's submission to keep feeling powerful. In a sense, despite how self-assured and independent they may seem, the narcissist cannot exist alone. They need someone else to dominate to feel like they exist. Your happiness threatens the narcissist's dominance. Feeling vitalized while in a relationship with a narcissist punctures their dominance. Showing your independent existence and vitality through happiness creates a pull for the narcissist to recognize you. Doing so comes at the cost of them feeling dominant. How can a self-perceived king or queen show respect to a puper? If that puper seems content instead of obedient, the narcissist will not stand for it. Who the narcissist choose to dominate? Narcissists can only dominate people who are vulnerable to them. Tragically, this means that children like Joe are the most common targets. They learn that their happiness makes their parent unhappy. The narcissist child, यानी narcissist के जो बच्चे हैं, must police themselves to not show any enthusiasm unless it reflects directly upon their parent. It is painful to think about how the victim of such abuse have to dislocate themselves from themselves just to stay out of danger. They cannot have spontaneous experiences of joy. They cannot even know how they feel because that involves looking inward instead of outward at the narcissist. All of these ways of being provide the narcissist with what they want, to know they have power and control over the victim. तो दोस्तों, रिलेशनशिप्स के लिए कनेक्शन ज़रूरी होता है और कनेक्शन बनता है जब दूसरा हमें एक इंडिपेंडेंट सेल्फ के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है और उसकी रिकॉग्निशन जो है वो भी इंडिपेंडेंटली होती है विदाउट एनी डोमिनियंस और प्रेशर फ्रॉम आवर साइड. हम अपने एक्शन को तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन दूसरे के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते.
तो यहाँ पे वर्नरेबिलिटी आ जाती है। नार्सिसिस्ट इस वर्नरेबिलिटी से बचना चाहता है, इसलिए वो रिकॉग्निशन नहीं चाहता। एक इंडिपेंडेंट पर्सन से इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन और कनेक्शन नहीं चाहता। कनेक्शन की जगह वो चाहता है डोमिनेट करना, उसको एक सबमिसिव वन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से, इसी वजह से स्केपगोट चाइल्ड को डिसमिस कर दिया जाता है और गोल्डन चाइल्ड को जो है वो तारीफ़ की जाती है और उसको जो है वो पसंद किया जाता है बाय अ नार्सिसिस्ट, क्योंकि स्केपगोट चाइल्ड एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह से इंडिपेंडेंटली कनेक्शन चाह रहा होता है, जो कि नार्सिसिस्ट बर्दाश्त नहीं करते, उसको डिसरिस्पेक्ट समझते हैं, वो सबमिशन चाहते हैं जो गोल्डन चाइल्ड देता है। ठीक है, तो उनको ह्यूमन कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनको डोमिनेंस की ज़रूरत है। और इस ट्रू कनेक्शन के ना होने की वजह से उनको इस वूंड को, इस नो रिकॉग्निशन और कनेक्शन, नो ट्रू सेल्फ रिकॉग्निशन और कनेक्शन के जो उनको वूंड मिलती है, उसको उसके ऊपर जो बैंडेजेस वो लगाते हैं, वो टाइम टू टाइम उनको डोमिनेटेड फील करके जो है वो बैंडेजेस लगाते हैं, या उसको थोड़ा बेटर फील होता है और ज़्यादा कंट्रोल एग्जर्ट करके और ज़्यादा डोमिनेट करके। और डोमिनेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें कई दफ़ा जानबूझ के दूसरे को, कई दफ़ा नहीं, हमेशा ही बाय नार्सिसिस्ट इंसल्ट की जाती है, डीवैल्यू किया जाता है अपना कंट्रोल एग्जर्ट करने के लिए। तो वो जब भी बुरा फील करते हैं वो दूसरे पे कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और इंसल्ट, डिवैल्यूएशन और बढ़ा देते हैं। उनको थोड़ा बेटर फील होता है फॉर द टाइम बीइंग, बट ट्रू रिकॉग्निशन और कनेक्शन की जो जगह है वो हमेशा खाली रहती है। इस वजह से वो वॉइड रहता है उनका हमेशा। और ये किताब पढ़िए, बहुत बहुत कुछ आपको पता लगेगा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बारे में, स्केपगोट चाइल्ड के बारे में। और बहुत बहुत मज़ा आएगा आपको ये पढ़ के। तो चलें, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।